Hello बच्चों, let's see this question. Question says Newton's law of gravitation applies to small bodies only, large bodies only, all bodies irrespective of their size, none of above. Here the key concept is Newton's law of gravitation. Newton's law of gravitation is applicable to every body in the universe. To every body in universe. It states that every body attracts every other body. Every body अट्रैक्ट करती है अदर बॉडी को इन यूनिवर्स विद अ फोर्स. इन यूनिवर्स with a force which is directly proportional to product of their masses. And inversely proportional to square of distance between center. Inversely proportional to distance between them. Force is direct proportional to product of masses of objects and inversely proportional to square of distance between them. तो it is applicable for अगर मास m1 m2 भारी बॉडी का है, हैवी बॉडी का है तो भी चलेगा, चार्ज बॉडी का है तो भी चलेगा और स्मॉल बॉडी का है तो भी चलेगा. तो हम लिख सकते हैं फॉर ऑल बॉडीज इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर साइज. चाहे वो हैवी हो, चाहे वो छोटी हो, चाहे वो चार्ज्ड हो, कोई सी भी बॉडी जिसका मास होता है वो मास पार्टिकल एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं विद ग्रेविटेशनल फोर्स. दिस इज योर आंसर. आंसर ऑप्शन सी. आंसर सी. This is your answer. I hope you understood the solution very well. Best of luck. Thank you.